Yes. Dealing with the vast community Yes. of Muslims around the world, especially in the United States. And my big concern is that you have infinite number of different cultures coming from the Middle East. Yes. What would you address the issue of discrimination that they have against, the Muslim community of black Muslims here in America? Because they do have a lot of segregation, a lot of discrimination, a lot of racism. Coming from Muslim brothers here. Coming from abroad? No, abroad, brothers that live here now. Okay. That have come from abroad. Okay. That live here. Okay. I can say this. One of the things, I must be honest with you, brothers and sisters, that I love about Islam, is that there's no racism in Islam. That is the religion of Islam. That is, when you read the Quran, and I got a confession to make. Another confession. You know how some people confess they used to be alcoholics? I'm a recovering alcoholic. Well, I'm not a recovering alcoholic, but I am a recovering racist. I used to be a racist. And I used to be in a group called the Nation of Islam. Some of you here was part of that group, right? We used to teach. Now, you really got to keep this here. I'm serious. See, I even covered the... Sound is still on. In the Nation of Islam, they used to teach that all white people were devils. And I used to be part of that movement, same movement that Malcolm X was part of. And like Malcolm, he woke up, he made Hajj, he made pilgrimage. I just read one verse from the Quran, and it made me love the position of Islam with other races. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. O mankind, we made you out of a male and female, and we, Allah, made you into nations and tribes that you may know one another. Verily, the most honored of you in the sight of God are those who are most righteous. This was enough for me to realize that there are good in every race, black and white. And trust me, it makes no difference to me. I'm a Muslim. If my leader is a black man from Nigeria with skin as dark as charcoal, or a Muslim in Turkey or Bosnia whose skin is white as snow, and he's my leader, it doesn't make me a difference what his nationality is, what his color is, as long as he's a believer and I give my obedience to him. I don't have that color consciousness anymore. God is my witness. I love people. I love different cultures. All the Muslims who know me know that my favorite food is Pakistani food. Until I went to Turkey. You see, so I enjoy the culture of other people all over the world. And I love Africa, and I love Europe, and I love all the places, because that's the way it is. Allah made the beauty in all the races, and it is Him. And I'm telling you the truth. I am a black man, and I am proud to be what I am. You should ask me why. Because Allah says in Quran, هُوَ الَّذِي يُسَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَمِ كَيْفَ يَشَاءُ. It is God who created you in the wombs of your mother as He pleased. And if Allah is pleased to make me a black man with kinky hair and broad nose and thick lips, I'm happy to be that. And by the same token, whatever you are, your red hair, your blonde hair, your white skin, your green, green. Whatever it is, you should be happy because the God created you that way. Allah made you. And if Allah made you be a man, be happy to be a man. If He made you a woman, be happy to be a woman. And this is the beauty of the Islam, and there's no racism in Islam. But because of the weakness of people and the contamination of some people, then racism creeps in the hearts of people, silly-minded people, who look down on black people, or look down on white people, or look down on people of color. So this sickness, we have to help them. And how we do it, I wish you would come to our masjid in Brooklyn. It is a mixture in our community. We have African Americans, we have Arabs, we have Indians, we have Muslims, white European American Muslims, we have Hispanic Muslims in our community, a nice mixture, and we love each other. And we don't even see a difference, honestly. So truthfully, brother, the problem is that incomplete conversion into the Islam, I don't care what country they come from, but when you drink of Islam, then you know that there's no racism. And that's why the Prophet said to obey the Amir, the leader appointed over you, even if it's an Abyssinian slave with a head like a raisin. So this, put it in your heart, the Islam, and you follow the Islam, and you see there's no racism. And I'm telling you,
one of the sicknesses of this country is this racism. It still exists today, institutionalized racism. And as long as a Muslim from any place in the world comes here and pick up that disease, and they'll start acting like the people, the same sick people in this society. Not all of them, but the sick ones, they start imitating them rather than imitating the Prophet of Allah, peace and blessing be upon him. And if you study the history of Islam, you see that it was well integrated of people of color and things like that, because the real judgment is not on skin color, but our actions. Okay, Brother Shabir, this is a question about the caste system. So the person is asking, my question is about the caste system that is found amongst Muslims in the subcontinent. What basis does this have in Islam? Well, I should say it has no basis in Islam. In Islam, actually, there is an emphasis on egalitarianism, on the equality of all people. The Quran tells us in the 30th chapter, Surah Al-Rum, that God created us into many, made us so many different colors and speaking many different languages, and these are signs of God's greatness. In other words, God could have made us all looking the same, but He made us different, and we can appreciate this when we look at a flower garden with a wide variety of flowers of many different colors. We appreciate the beauty of the garden for this mixture of colors and patterns and shapes. So human beings all looking the same might have given us a very dull world, but the world has become much more interesting by having the variety of peoples that we see now. In the 49th chapter of the Quran, God tells us in the 11th verse that He has made you into nations and tribes so that you may know each other. Again, there is a curiosity that is created when we see somebody looking different. We want to know what that person is, what they are about, and so on. So that creates an interest in other people, as opposed to you've seen so many people all looking the same, you lost interest in people now. The Quran says that God created you into this variety so that you may know each other. And then the verse continues to say, Inna akramakum inda Allahi atqakum, the most honorable among you in the sight of God are those who are most aware of God. Mm-hmm. So it's that inner awareness of God, which we cannot measure on the outside. It has nothing to do with skin color or eye color or anything like this. But this is internal. Only God knows if that person is closer to God than the other person. Mm-hmm. So I'm not familiar with the way Muslims view the caste system. Have some Muslims co-opted that system and view other human beings within that light? Many Muslims living in various parts of the world are inevitably influenced in some way by what's happening among them. Mm-hmm. We living in Canada, we get influenced by Canadian society, yes, and cultures and norms and values and so on. In the Indus Valley region, some of the religions emerging in that area had a belief that people are of different castes. The primordial man, they said, was divided up. The Purusha was divided up into 4 pieces. From the head came the Brahmins, or the priestly class. From the arms came the Kshatriyas, or the warriors. From the legs came the Vaishyavas, or the merchants. And from the feet came the Shudras. This is the lowest class. And of course, there are some people who, by virtue of certain circumstances, could not be linked to any one of these classes by way of ancestry, and they came to be known as the outcasts. Mm-hmm. And the great mind, Mahatma Gandhi, referred to them as children of God, Harijans. So there has been this historical belief and many modern responses to it, including the outlawing of some of the practices related to these underlying beliefs. But naturally, Muslims in that region would have been influenced by this way of thinking, though it is entirely foreign to the religion of Islam. Thank you for those thoughts, Brother Shabir. You're welcome. India, the second most populous country in the world.
For centuries, its social structure was built around a rigid Hindu class or caste system. Caste was abolished over 50 years ago, but its legacy is still felt in modern Indian society. The Hindu population, around 84% of the total 1.2 billion people, is still influenced by the four main traditional castes, though there are many subsects within each. Brahmins are the priestly class, Kshatriya the warrior class, Vaishya are the merchant class, and Shudra the working class. But below all of these, outside the four main caste groups, are other social groups, including the Dalits, the oppressed. They are social outcasts, and they do the most menial work and often live in conditions hardly fit for human habitation. Such is the desperation of some Dalits, they sometimes convert from Hinduism to other faiths, including Islam. They hope to escape discrimination by other Hindus and to become accepted by their new religious community. Any person or every citizen of this country under Article 25 of the Constitution has a right to acknowledge, practice, propagate the religion of his choice. Typically, Dalits live in areas like this shantytown in Mumbai. People here belong to the washermen community, known as Dhobis, and they often share the same surname, which clearly identifies them as outside the caste system. Some of these Dhobis have converted to Islam, among them Rakesh, who has changed his name to Ali Kanodia. हम लोग धोबी थे, लोअर कास्ट के थे, और ये एक बात मेरे को हमेशा चिढ़ लगती थी कि जहाँ पे मैं एक बार कहीं जाता था अपना पहचान बोले तो अभी इंट्रोडक्शन के लिए पहले सरनेम पूछते। मैं बोला मेरा नाम राकेश है। राकेश क्या? हिंदू के घर पे गया, इंट्रोडक्शन लेता है सामने वाला तो राकेश क्या पूछता है, क्योंकि वो टीका लगाया है, गले में कंठमाला पहना, वो क्या बोलते उसको, कंठमाले जो भी बोलते हो, तो वो ब्राह्मण, सामने वाला ब्राह्मण, जो मेरा सामने नेबर है वो भी ब्राह्मण। तो जब पहले भी ज़्यादा बात नहीं करता था, मगर जेलसी वो जो चेहरे पे नज़र आती है ना, वो नहीं थी, मगर अब है कि धर्म भ्रष्ट कर। अरे तुमने तो धर्म में से निकाला हमको, तुमने सुकून से रहने कहाँ दिया। चेहरे पे नज़र आता था हम ऊंचे हैं तुम नीचे हो, ठीक है, हम इधर आ जाते, इधर सब ऊंचे सब बरोबर। Some Hindu Dalits believe converting to other religions will help them escape the prejudices of the caste system. And it's not a new phenomenon. B.R. Ambedkar was independent India's first law minister and the principal architect of its constitution. But he began life as a Dalit, converted to Buddhism in later life, and campaigned vigorously for more social freedoms for Dalits. He celebrated right across India for calling for equal rights for the Dalit community. If you look historically at India, then you will see that there's been a series of reform movements that have come up. Some have been internal within the Hindu religion itself. The others, like Buddhism or Christianity or Islam, have come in preaching a more equal society. And people have adopted them. So Dalit communities, a large number of them, for instance, converted to Buddhism under Ambedkar. Many of them converted to Sikhism. Many converted to Islam, and many have converted to Christianity. So yes, they have converted. But unfortunately, what we do find is that the traditional practice doesn't actually overcome the caste barrier. So you will still see that there are Dalit Sikhs, there are Dalit Muslims. They exist. That community still remains Dalit community. The city of Mumbai, 30 kilometers northwest of Mumbai in the state of Maharashtra,
saw large numbers of Muslims arrive in the early 1990s. Many were fleeing riots in Mumbai, which erupted between Hindus and Muslims in 1992. Their increased presence also influenced others to convert to Islam, and today, Muslims make up around 90% of Mubra's population. Nafis al-Sheikh lives here with his family. He converted first from Hinduism to Buddhism, but later decided to convert again to Islam. पहले तो समझ लो मेरा वही दलित में था, बौद्ध धर्म में, और जो बात है इस्लाम की तरफ आने की, तो वो तो समझ लो जो बचपन से माहौल थोड़ा सा था वो तो अलग बात है, लेकिन दोस्त लोग भी इस्लामी दोस्त लोग थे जो इस्लाम की बहुत सारी बताते थे इस्लाम के बारे में। तो आहिस्ते आहिस्ते वो इस्लाम की तरफ रुझान जो है वो तो बढ़ते ही गया। और जब आदमी एक उम्र में आता है कि उसको लगता है कि हाँ यार कुछ अल्लाह या कुछ मेरा जो मुझे सेव कर सकता है, जो मुझे पालने वाला है, ढूंढूं उसको सही। तो वो मुझे लग रहा था कि ये इस्लाम की तरफ ही है या इस्लाम में ही वो कुछ है वो चीज़ जो हो सकती है करके। और इसी तरीके से आहिस्ते आहिस्ते अल्लाह ताला ने मुझे इस तरफ एक्सेप्ट किया और आ गया। Before moving to Mumbra, Nafis grew up in an isolated Dalit community deep in rural Maharashtra. गांव में जब मैं गया हूँ तो मैंने देखा हो कि अभी भी जो दलित लोग की बस्ती है वो अलग है, और जो ब्राह्मण है, मराठा लोग हैं, उन लोग अपना साथ में एक अलग रहते हैं, लेकिन दलित लोग की बस्ती अलग है। आज भी गांव में वही हाल है, और उसको बाकायदा मराठी में जैसा महारवाड़ा बोलते हैं। महारवाड़ा बोले तो है ना दलितों की बस्ती बोलकर नाम है उसको, और उसको महारवाड़ा बोला जाता है। तो ये तो मेरे सामने ही था जो बचपन से मैंने देख चुका हूँ। और हम लोग वो उसी बस्ती में अलग से रहते थे। हम लोग गाँव में, हमारे गाँव में घर नहीं होते थे ऐसे। कुछ ही लोग अभी कुछ लोगों के घर गाँव के अंदर है, यानी उनके साथ में। तो महारवाड़ा बोलकर आज भी अलग से बस्ती है गाँव। और सब जगह, सिर्फ हमारे गांव में नहीं, सब गांव का यही हाल है। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। Nafis used to belong to the Shudra caste, the working class. He wasn't quite the social outcast the Dalits are, but belonged to the lowest group in the caste hierarchy. बचपन में तो ये सब ज़्यादातर अपने ये दिमाग में बातें नहीं आती थी, और ज़्यादा मेरी कम्युनिटी है तो मैं अपने कम्युनिटी में रहा तो वो एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो वो ज़्यादा फीलिंग्स उस वक्त नहीं थी। हाँ, लेकिन जैसे एक जवानी आती है तो उस वक्त जब वो फीलिंग, जब मैंने वो किया, एक्सपीरियंस लिया क्या नहीं यार कि हमको लोग दलित, निचली जाति वाले ये सोचकर हमको वो करते हैं, उन लोग यानी हेट करते हैं थोड़ा तो भी। और ज़्यादातर तो ब्राह्मण लोग, उन लोग हमको जैसे कि उनके उसमें 4 वर्ण है ऐसा है, जैसे कि क्षत्रिय, ब्राह्मण और एक पता नहीं, लेकिन जो कदमों में है वो है शूद्र ऐसा है। तो यानी शूद्र, हम पैर में हम इसलिए शूद्र, और शूद्र की कोई कीमत नहीं, कोई औकात नहीं, यानी इंसान में ही बंटवारा ऐसा है। तो ये बातें सोचता था मैं इस मामले में, यार हमको यार जो ये लोग हैं, ख़ास तौर पे ब्राह्मण लोग, स्वर्ण लोग जिनको बोलते हैं, ये लोग हमको गिरी हुई नज़र से ही देखते हैं। और आज भी वही हाल है, ऐसा नहीं कि कोई बदला है, आज भी वही हाल है। मैं इस बात को आज भी किया हूँ नोटिस कि उन लोग गिरी हुई हालत में ही देखते हैं, ऐसी बात है। The challenges facing those who decide to convert aren't just social. This is Bhindi Bazaar, an old area of Mumbai known for its antiques and hardware shops. It's a predominantly Muslim quarter. Within it is the Jama Masjid. It's the oldest and largest mosque in Mumbai and is authorized to grant religious conversion certificates.
In India, potential converts to Islam have to go through a two-part legal process. First, they make a statement in court under oath, and then they pronounce the Islamic testimony of faith, the Shahada, before an imam. Rizwan Bahyin works as a volunteer in the Azad Madian court. He helps new Muslims finalize their conversion. लीगली डॉक्यूमेंट्स इसलिए है कि देखो शरीयत के हिसाब से तो एक आदमी इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया, तो वहाँ तक मामला हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है उसको राइटिंग में उसका स्टेटमेंट वगैरह लेना, अपने तौर से उसको नोटराइज वगैरह कराना, उस पर जो है गवर्नमेंट ने ये करके कानून बना के रखी हैं, तो इसलिए ये तमाम चीज़ें करना पड़ता है। तो उसके तहत हम लोग उनकी जो लीगल प्रॉब्लम्स आते हैं, उनकी जो भी मामला आते हैं, नेम पुराना नाम एक रहता है, इस्लामिक नेम आया तो नेम चेंज का पूरा लीगली हम लोग इस अंदाज से आगे बढ़ाते हैं बात। हाँ, इस अंदाज के देखिए, अगर उनका निकाह नहीं हुआ तो वहाँ मामला आ सकते हैं। निकाह में अगर कौन से रिलीजियस एक्ट के तहत उनका ये हुआ है, तो ये नंबर 1 यहाँ से शुरू होता है। एडमिशन, स्कूल एडमिशन, उनके बच्चों का एडमिशन है तो उसमें मामला आते हैं। कहीं जॉब का मामला है, गवर्नमेंट का जॉब का सिलसिला आया तो डिफ़िकल्टीज़ बढ़ते जाते हैं। तो इसको आसान कराने के लिए हम लोग ये एफिडेविट का जो है इस्तेमाल करते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव की। But Dalits who convert can often face serious problems within their own original community. This center provides a shelter and legal assistance to women whose families oppose their conversion. It's not unknown for them to be falsely accused of, for example, stealing, so they get arrested and taken back home. This woman has taken refuge from her family here, and because she's educated, she's working as a teacher in the school attached to the center. तकलीफ़ें तो आई हैं उसमें जो है 1-2 केसेस जो है ज़्यादा ही जो है प्रॉब्लम क्रिएट किए थे, तो हम लोगों ने बाकायदा पुलिस स्टेशन गए थे, तो उसको केस भी लड़ना पड़ा। वो लोगों ने ये किडनैप करके लेके गए इस अंदाज का ये किए थे, तो हम लोगों ने जो है पुलिस ह्यूमन राइट्स वालों को अप्रोच किए, बाकायदा केस लड़ना पड़ा। एक केस काफ़ी लंबा अरसा, तकरीबन 1 महीना चला वो मैटर। तो फिर हम लोगों ने जो है टीवी में लाइव शो भी कराए उन लोगों का, एक्चुअली क्या ये लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सही नहीं है, तो उसका लाइव शो भी तकरीबन 50 मिनट वो एक केस भी चला था। तो बाद में जो है अल्हम्दुलिल्लाह जजमेंट जो है हमारे फेवर में आया, तो मामला हल हो गया। In recent years, several states in India have introduced legislation aimed at restricting religious conversion. Molbin Solkar is a lawyer who's worked on many cases of newly converted Dalits. See, remember one thing, any kind of conversion which is voluntary is permissible within the Constitution. Any person or every citizen of this country under Article 25 of the Constitution has a right to acknowledge, practice, propagate the religion of his choice. So any conversion which is done voluntarily for his own benefit out of his own choice is something that should be acceptable to everybody. However, unfortunately, the general tendency is that whenever a person converts to another religion, it is always misconceived that this person has either been induced to change or to convert, or he has been lured by giving him some economic or other benefit is being shown to him, and therefore a person converts. That is not always true. Majority of the cases which we see now, people convert not just because they want to derive some economic benefit, but because they also have realized what is their relationship between them and God, and which is the best religion that allows them to practice or to improve that relationship.
Ali Kanogia has faced strong opposition from his family over his conversion from Hinduism to Islam. बहुत मुश्किल है एक्चुअली कि सबसे पहले तो प्रेशर घर से ही आ जाता है कि एक नॉन मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है तो उसके घर वाले ही अपोज करने शुरू कर देते कि ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये बदनाम है मुसलमान, और कुछ नहीं, बल्कि हकीकत तो यही है कि एक अल्लाह की इबादत करना चाहिए, एक भगवान की पूजा करना चाहिए। और यहाँ पे हमारे इसमें सैकड़ों भगवान हैं और उसमें भी बटे हुए हैं कि जिस रिलीजन बोले तो जिस कास्ट में होगा, अगर महाराष्ट्रन होगा तो उन लोग का फेवरेट गणपति है, हिंदू है तो उनका फेवरेट राम है, उस हिसाब से सबका फेवरेट है अलग अलग। मगर एक मेन नहीं, यूनिटी है नहीं। अब हम कहते हैं कि राम हमारा भगवान है, तो फिर वो अपर कास्ट वाला बोल देता है कि वो हमारे जात में से था, मतलब हम लोग लोअर कास्ट वाले तो वो हमारा नहीं है। सीधी सी बात है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। नाम बताने से अगर तुम हमारी रिस्पेक्ट छीन लेते हो तो हम नाम ही बदल देंगे। यही प्रॉब्लम है ना, नाम बदल दिया हम। वैसे एक्चुअली मैंने नाम तो अपना अली कनौजिया रखा हो ताकि लोगों को पता चले कि मैं उस धर्म में से आया हूँ। मैं मुसलमान नहीं था, मैं मुसलमान बना हूँ बिकॉज ये रीज़न है कि मेरे धर्म में ये चलता है, इसलिए मैं मुसलमान बना हूँ। और मुसलमान में इक्वालिटी है और यहाँ पे डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम चल रहा है। Sometimes, caste discrimination against Dalits can be violent. In the countryside around Satna city in Madhya Pradesh, northeast of Mumbai, a number of Dalit communities have converted to Islam. Abdul Rahman Bharti was a Hindu Dalit. When he converted, it almost cost him his life. तो तरह तरह के अटैक हुए। अब यहाँ तक कि ब्राह्मणों ने गोलियाँ भी मार दी। जो सावर्ण हिंदू हैं, जिन्हें इस देश का आज हुक्मरान कहा जाता है, जिसे तमाम दुनिया के लोग हवा बना के रखा है, उन लोगों के द्वारा, जिन्हें ये अच्छा नहीं लगता। मैं एक किताब लिखा हूँ छोटी सी कि जिस धर्म में लोग जाते हैं उस धर्म के तो लोग स्वागत करते हैं, पर जिस धर्म से लोग चले जाते हट जाते हैं, उस धर्म के लोग पहले रोकने का काम करते हैं, फिर बाद में हत्या का प्रयास करते हैं। नहीं रुके तो हत्या का प्रयास करते हैं। तो मेरे साथ वही तो हालात हुए कि मुझे लोगों ने गोली मारा, मेरे बेटे को लोगों ने मारा, यहाँ कह के कि ले वो बनो मुसलमान, बनाओ मुसलमान। अभी भी मैं जब रास्ते में चलता हूँ तो पता नहीं कुछ लोगों कितनी व्यंग्यात्मक बातें करते हैं। कभी कभी क्या है कि मैं जा रहा हूँ तो कोई गाड़ी से जा रहा तो गाली दे के चला जा रहा है, कोई बड़ी खुशी से नज़र से देख रहा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाह लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। नहीं, वही तो बात है कि हमारा धर्म ये बेदीन हो रहे हैं, बेधर्मी हो रहे हैं। मैंने ये सब वे चाहते ये हैं कि इनको हम हिंदुत्व के नाम से रखे रहे, नहीं तो फिर मंदिर में चढ़ावा कौन करेगा? वो तो खुद पुजारी है और चढ़ावा करने वाले दलित हैं। मेरे गोली यहाँ लगी है, मेरे मिसेज के सीधे सीने में गोली लगी है। बचाव में जब वो भी थी तो मेरे मिसेज के सीने में गोली लगी है, मेरे यहाँ लगी है। अल्लाह का एहसान है। ये मेरे गोली लगी है। नहीं, एक गोली लगी है, एक तरफ से ऑपरेशन करके निकाला गया। ये गोली लगी है, ये गोली लगी। हाँ, वो तो हम लोग अचेत थे, बेहोश थे। और यहाँ तो फिर उस समय हालांकि
काफ़ी तादाद में पुलिस आ गई और लेके चले गए। फिर मीडिया वालों ने बयान दिया और मीडिया वालों के सामने हमने बयान दिया। जब होश आया, डॉक्टर दवा करने के बाद जब होश आया, पूरे बयान दिया। मीडिया वालों ने देखा, छाया, लेकिन कौन किसकी सुनता है। आजकल पैसों के सामने वो तो बहुत बड़े मालदार और यहाँ से और मुख्यमंत्री के एकदम से नज़दीक। This family was less fortunate than Abdul Rahman. Their son was found hanged from a tree. They believe he was killed because he wanted to marry a girl from a higher caste and that it was made to look like suicide. The case was never solved. Coming up, the Indian government now discriminates positively in favor of disadvantaged social groups like Dalits, what it calls scheduled castes and tribes. What happens is that the SC/ST Act, the protection, includes Sikhs and Jains and Buddhists, but it doesn't include Christians and Muslims, resulting in serious unemployment problems among Dalit Muslims. कभी हुआ भी नहीं ऐसा, खाली मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो थोड़ा बोलती थी वो मराठी में मेरे से बात करते थे। वो बोलते थे क्या काय के लिए ऐसा करने का था, अभी इस्लाम नहीं कबूल करते तो मेरे आदमी उसको अच्छा काम पे भी लगा देते थे। And in one village in Madhya Pradesh is a social group which is so despised they're set apart from even the rest of the Dalit community. कि हम स्कूल वगैरह जाते थे, हमें पीछे बिठाते थे, किसी में मतलब पढ़ाई में नहीं, इसमें सब में हमें पीछे ही रखते थे, मतलब आगे नहीं बढ़ने देते थे हमें। हम कभी सोचते थे कि हम आगे निकल जाए तो नहीं निकलने देते हमें। सब बात में हमसे भेद करते थे, खाने पीने में, पढ़ाई लिखाई में, काफ़ी नए वगैरह चेक करने में, सभी उसमें। Dalits are the social group at the very foot of India's enduring caste system and suffer severe class prejudice. They're a scheduled caste, an SC, and the Indian constitution reserves Hindu Dalits seats in parliament, jobs, and school and university places. But to escape discrimination by higher caste Hindus, some Dalits convert to Islam and Christianity. This means they're technically no longer Dalits, and they disqualify themselves from opportunities reserved for scheduled caste Hindus. Although minority faiths do enjoy some government-reserved benefits, the disadvantages of conversion may outweigh the advantages, especially when it comes to jobs. What happens is that the SC/ST Act, the protection, includes Sikhs and Jains and Buddhists, but it doesn't include Christians and Muslims. So what happens is that they get excluded from the quotas for SCs, the Dalit rights quotas and so on. Those they get excluded from. So in a country where they're already practicing a minority religion, for a Muslim who's at this point of time already being targeted for a number of other reasons, this becomes an added problem. So they're almost feeling like a double level of risk to their lives, because they are, one, possibly feeling the isolation of being a Muslim, then they're being isolated also because they're Dalit. So it's double for them. This double whammy hits Muslim Dalits hard. एक मेथड तो ऐसा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और ये थोड़ा लेंथी है, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, टाइम लगेगा। Ali Kanodia is a Dalit Muslim. He was barred from going to university after high school and hasn't been able to get a government job. He volunteers to teach children in his area of Mumbai. रूल्स है मगर हम पे एप्लीकेबल नहीं है,
फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि आप कह रहे हो कि लो कास्ट का सर्टिफिकेट, लो कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, राइट? रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब मेरे पास सर्टिफिकेट लो कास्ट का नहीं है, मेरे माँ बाप इलिटरेट थे, थोड़े ना समझते, पेपर वर्क करने आता नहीं था, तो इनकी ये छोटी सी गलती की वजह से मैं पूरी ज़िंदगी झेलूँगा, बिकॉज आई डोंट हैव दिस सर्टिफिकेट ऑफ लो कास्ट। अब ये लो कास्ट का सर्टिफिकेट मेरे पास है नहीं, मुझे काम कहीं मिल रहा नहीं है, लो कास्ट देख के हायर कास्ट वाले भगा दे रहे हैं, और जो लो कास्ट के लिए रिजर्वेशन जो रिजर्व करके रखा है जो सीट्स, उसके अंदर जाने के लिए मुझे पास सर्टिफिकेट नहीं है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है मगर सर्टिफिकेट नहीं है। मेरे पास बुराई है, जो लोग बुराई मेरी कर रहे हैं, जो जलन, जो नफ़रत है, जो मैं झेल रहा हूँ, वो सब तो हकीकत है, मगर मुझे अंदर जाने के लिए जो पास चाहिए वो पास मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे वो काम नहीं मिलेगा। लोअर कास्ट का रहने के बावजूद उनको सब कुछ मालूम है, हाँ ये लोअर कास्ट का है, बिकॉज ही डजंट हैव दिस सर्टिफिकेट ही कांट एंटर इनसाइड, वो अंदर एंट्री नहीं ले सकता। तो ये एक पेपर के ऊपर मेरी पूरी लाइफ डिपेंड है, मेरा पूरा फ्यूचर डिपेंड है। Nafis al-Sheikh and his family live in the majority Muslim city of Mumbra, north of Mumbai. When they converted to Islam, his wife was anxious to complete the name-changing process before their children went to school. तो सोसाइटी में तो कुछ नहीं, मेरे फैमिली में थोड़ा वो करते थे कि दलित है करके, तो मैं वो माइंड नहीं करती थी, निगलेक्ट करती थे। तो बोलते थे वो दलित है, वो दलित लोग को महार बोलते ना, तो बोलते महार है वो, क्या बोल के किए करके शादी करनी। बच्ची के लिए मैं इनको बोलती थी कुछ तो भी एक धर्म वो करो कि ताकि कल को बड़ी होंगी फिर स्कूल में नाम देने का है, कौन से नाम से नाम फिर वो होते ना मिक्सड अप होते, इसके लिए। और फिर इनके दिमाग में आया, बोले इस्लाम हम लोग कबूल करें कैसा। मैं बोले बहुत अच्छी बात है, मेरे को ऐसा भी पहले से बहुत अच्छा लगता है। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं फील होता है, कभी हुआ भी नहीं ऐसा। खाली मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो थोड़ा बोलती थी वो मराठी में मेरे से बात करते तो बोलते थे क्या काय के लिए ऐसा करने का था, अभी इस्लाम नहीं कबूल करते तो मेरे आदमी उसको उनका अच्छा काम पे भी लगा देते थे। तो मैं कुछ बोलती हूँ, सुन के चुपचाप रहते हैं। Converting to Islam meant Nafis lost his entitlements under the Reservation Act and its benefits allocated to Hindus. नहीं, ये तो सब नहीं सोचता हूँ मैं, क्योंकि जो जिसके नसीब का है उसको उतना ही मिलता है। हाँ, बाकी अगर ऐसा दुनिया के हिसाब से सोचूं मैं तो ये बात तो सही है। अगर मैं दलित में रहता तो शायद जैसे अभी बच्चे लोग मेरे स्कूल नहीं, स्कूल की फ़ीस वगैरह रह जाती। अगर मैं दलित होता एक फॉर्म भरता कि भाई हम लोग शेड्यूल कास्ट वाले, तो फ़ीस माफ़, बच्चे मेरे पढ़ रहे, वो टेंशन नहीं रहता। काम के लिए जैसे मेरा बहन का आदमी है, वो मुझे काम लगा सकता था, लगाने की बात भी थी, लेकिन बोला तूने दाढ़ी रखा है, तेरे को मैं अभी कैसे काम पे लगाऊँ, क्या बोल कर लगाओ, ऐसा बोल के उसने मुझे काम भी 2-3 नहीं दिया है। ऐसी बात है। तो ऐसे सब चीज़ें आई है, दुनिया के एतबार से बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे उसका गम नहीं है बस, लेकिन ये भी बोल रहा हूँ ऐसी बात का। और इस बारे में कभी मैंने ज़्यादा कभी सोचा भी नहीं। Work prospects are no better for Dalit Muslims out in the countryside. Here in Madhya Pradesh, there are large numbers of Dalit Muslims. Most are landless, subsistence farmers. When the farming season's over, they go back to the big cities like Mumbai to work as laborers. Abdul Rahman Bharti is a local farmer who was shot in the leg after his conversion to Islam. नहीं, उनके पास खुद की ज़मीन तो नहीं है, कुछ लोगों के पास थोड़ा बहुत है जिसमें गुजारा नहीं हो सकता, और वो माली हालत से गुजर रहे हैं। और इधर उधर जैसे बॉम्बे जाना है, किसी को वहाँ गए तो कुछ दिन काम किया, फिर आ गए, बॉम्बे जाना है, पूना जाना है, गुजरात जाना है, इस प्रकार से लोग जाते हैं और अपना गुजर चलाते हैं, किसी प्रकार अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं। हो नहीं रहा, लेकिन बॉम्बे जाके और कोई 1 आध महीने काम किए, फिर यहाँ आ गए। यहाँ किसानों के यहाँ
खेतीहर लोगों के पास जाते हैं मजदूरी करने और मजदूरी करते हैं, खेती करते और उस मजदूरी से अपना पेट पालते हैं। मैं गांव में खेती किसानी काम करता हूँ। जब खेती काम हो जाता है तो बम्बई चला जाता हूँ, थोड़ा माली करता हूँ, पैसा रहता है, बस परिवार चलता है। बम्बई यहाँ कोई काम खेती के अलावा कोई काम नहीं, पैसे की इनकम नहीं है। अगर बम्बई चले जाते हैं 2-3 महीने रहें तो 2-4-10 हज़ार रुपया लेके आएँ तो बस इधर परिवार परवरिश के लिए हो जाता है। मैं बहुत दिन के बाद अभी 2 महीने हो गया मेरे को इस्लाम कबूल किए, बम्बई में कलमा पढ़ा हूँ। मैं उधर ही मजदूरी करने जाता हूँ बम्बई में और वहीं कलमा पढ़ा। In Tarana village, in another part of Madhya Pradesh, are the Hillas. They're the very lowest group in the Dalit community. Their main job is garbage picking, which includes the manual cleaning of human waste. They're the social group most discriminated against by government and society. And they're set apart from the rest of the Dalit community. Even Dalit Muslims look down on them. मेरा नाम सगीना है और हिला जाती समाज हमारी। यही मेला ढोने का काम करते थे, मेला ढोना वगैरह ये सब काम करते थे। यही कि हम स्कूल वगैरह जाते थे, हमें पीछे बिठाते थे, किसी में मतलब पढ़ाई में नहीं, इसमें सब में हमें पीछे ही रखते थे, मतलब आगे नहीं बढ़ने देते थे हमें। हम कभी सोचते थे कि हम आगे निकल जाते, नहीं निकलने देते हमें। सब बात में हमसे भेद करते थे, खाने पीने में, पढ़ाई लिखाई में, काफ़ी नए वगैरह चेक करने में, सभी उसमें। प्रार्थना में जब हम जाते थे तो हमें अलग खड़ा करते, प्रार्थना में भी उन लड़कियों की लेन अलग बनाते जो मुसलमान समाज की थी, पठान समाज की, वो सब अलग खड़े, और जब हम हिला समाज के हमें अलग खड़े करते। और हमें भी इतना दूर खड़े करते हैं कि ऐसा नहीं कि हम उनसे या तो हमारे हाथ पैर उनसे टकरा जाए, अगर हो ऐसा कुछ हो जाता नहीं तो वो हाथ पैर धो के आते। और जब हम जैसा भी ये पल्लिया बिछा, ऐसा अगर बिछा के अगर कुछ बैठ जाते तो वो लोग पलटा के बैठते थे, यानी ये बैठे हैं इस पर हम नहीं बैठेंगे। नहीं, वो नहीं बात करते हमसे, वो बोलते थे कि तुम गंदा काम करते हो, तुम भंगियो, हम नहीं बात कर रहे तुमसे। ये काम था उनका, खेलने में, मैदान में, सब जगह, मतलब कहीं पे भी। काफ़ी वगैरह का भी हम उनसे मांगते कि आप आगे हमसे लिखने के लिए काफ़ी दे दो, तो नहीं देते, यानी हमारी चीज़ें गंदी हो जाती हैं। उनके घरों पे अगर जाते ना, खड़े हो जाते ना, तो पानी डाल के सफाई करते, धोते थे। Many Indian Muslims are descendants of earlier converts. Asif Sheikh was born a Muslim. His family were originally Hindu Dalits, but converted to Islam several generations ago. Since the year 2000, he's run Jan Sahas, now a leading human rights organization campaigning for justice on many social issues across 5 states, including Dalits generally and manual scavenging in particular. मेरा नाम आसिफ है और मैं ये जो जन साहस संस्था है इसके साथ में जुड़ा हूँ और हम लोग एक कैंपेन भी चला रहे हैं। वो कैंपेन का नाम है राष्ट्रीय गरिमा अभियान। तो राष्ट्रीय गरिमा अभियान में ज़्यादातर हम लोग जो मेला ढोने की प्रथा है उसके समाप्ति के लिए काम कर रहे हैं और इस संस्था के माध्यम से काफ़ी अलग अलग तरह के प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं जिसमें जो शेड्यूल कास्ट या फिर दलित मुसलमान या जो बच्चों के सवाल हैं उन पर हम लोग काम करते हैं। तो इस तरीके से भेदभाव होता है मुस्लिमों के अंदर जो अदर कास्ट के अंदर भी। तो हम लोगों ने 2000 में एक स्टडी किया जिसमें हमने देखा कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो दलित हैं और दलित मुसलमान हैं, वो बड़े पैमाने पे अभी भी दूसरों का मल उठाने का काम करते हैं
और वो मल उठाते हैं, उनको लगता है कि ये काम हमारी जात ने दिया है, हमको अल्लाह या भगवान ने दिया है, लेकिन असल में उसके वजह से उनको अलग अलग तरह की छुआछूत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो भेदभाव होता है वो बच्चों के साथ में होता है, क्योंकि उनका जो पूरा सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, एक अलग तरह के इंसान उनको बना देते हैं। उनको मन में लगता है मैं क्यों इस मदरसे में जाता हूँ या क्यों इस स्कूल में जा रहा हूँ जहाँ पे मेरे को इस तरह से ट्रीट किया जाता है, और मैं ह्यूमन बीइंग की तरह से तो ट्रीट नहीं किया जाता है, क्योंकि कोई इंसान को आप इसलिए भेदभाव रख रहे हो क्योंकि वो इस कास्ट में पैदा हुआ है बाय बर्थ, वो अभी उसके काम से कोई लेना देना नहीं है। लोग कहते हैं कि जन्नत आपको तब मिलेगी जब आप ये काम करोगे, लेकिन इनको तो पैदा होने के बाद जहन्नुम मिलती है, क्योंकि इस कास्ट में पैदा हुए वो, और इसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, जस्ट वो पैदा हुए, इसलिए उनके ऊपर ये सारे बाउंडेशन आ जाते हैं। तो हमको ये लगा कि ये सबसे बड़ी गुलामी है, ये स्लेवरी है जो कास्ट के वजह से एक व्यक्ति को मिलती है। और भले ही आप कन्वर्ट हो जाओ, आप कोई और रिलीजन में हो जहाँ पे आप दलित हो और आप कन्वर्ट होके मुस्लिम बन गए, तो भी आपके साथ वो छुआछूत, वो डिस्क्रिमिनेशन जाता नहीं है। तो ये जो गांव है इसका नाम तराना है और ये मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले में है। और यहाँ पे तकरीबन 37 महिलाएं जो हेला समुदाय से, दलित मुस्लिम समुदाय से हैं, वो लोग मैला उठाने का काम करती थी। और मैला उठाने के काम में ये होता है कि वो गांव के जो अलग अलग समुदायों के घर हैं, अलग अलग जातियों के घर हैं, वहाँ पे जो कच्चे शौचालय बने हैं, वहाँ से वो उन शौचालयों से उनका मल उठाती थी और उसको डिस्पोज करने का काम करती थी। हाँ, जब हम लोगों ने यहाँ पे काम शुरू करा था, जब ये अभियान यहाँ पे शुरू हुआ था, तो उस समय तो बहुत अलग अलग तरह के भेदभाव और अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस यहाँ पे होती थी। तो उसमें जैसे मस्जिद के अंदर भेदभाव था, कब्रिस्तान के अंदर, या फिर जो मदरसा है वहाँ पे भेदभाव, या रोज़ा अफ्तियार के टाइम में काफ़ी सारे लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में भेदभाव होता था। तो ऐसे अलग अलग तरह के भेदभाव उस समय हो रहे थे। तो ये जो अभियान हम लोगों ने शुरू करा था, गरिमा अभियान, इसका एक मकसद तो ये था कि मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह से ख़त्म हो, लेकिन दूसरा मकसद ये भी था कि जो छुआछूत या भेदभाव हो रहे हैं दलित मुसलमानों के साथ में, और जो दलित मुस्लिम हैं उनके साथ में भेदभाव, एक तो जो लार्जर सोसाइटी है वो लोग करते थे, लेकिन जो दूसरे मुस्लिम हैं वो लोग भी उनके साथ भेदभाव करते थे। तो वो मुद्दों के बारे में भी हम लोगों ने काम करना शुरू करा और अभी काफ़ी हद तक वो भेदभाव खत्म हुआ है। Discrimination might have lessened, but it still exists. The Hillas have a burial ground quite separate from all the other ethnic and religious groups. तो अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये हेला कम्युनिटी का कब्रिस्तान है। यहाँ पे हेला जमात के लोगों को दफनाया जाता है, और ये पूरे कब्रिस्तान में कई सारे कब्रें हैं, और ये लोग दूसरे कब्रिस्तान में दफना नहीं सकते हैं। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे पिंजारा समाज का कब्रिस्तान है, फिर एक दूसरे तरफ है वहाँ पे फ़कीर समाज का कब्रिस्तान है। तो ऐसे यहाँ पे जितनी अलग अलग मुसलमानों में जाते हैं, उस हर जात का एक अपना कब्रिस्तान है। जैसे यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। हमारा अलग है, हिला मुस्लिम का, इधर हिला समाज का नहीं, इधर मुसलमान का। पहले हमारे भी वो इधर ही दफनाते थे, हमारा नहीं था तो, पर अब नहीं दफनाने देते। वो मैयत वापस कर दी थी हमारे दस। उन्होंने क्या था कि मैं मरूँ तो मेरे को इधर ही दफनाना, तो मरी तो हम इधर ही ले गए उनको, कब्र सब खाद के न रखी नहीं ले गए। तो ये आ गए मुस्लिम, मतलब मुसलमान ने उनके किन्यानी दफना दोगे कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं होगा, कहाँ तुम्हारी कब्रिस्तान उधर है, उधर ले जाओ आप। हमारे उधर खाली भागल लगी हुई थी, सब गाय न ढोर न बैल न सब चढ़ते हैं कब्रिस्तान पे वहाँ। तो जहाँ से मैयत दफना उन्होंने दफना नहीं दी ना, वापस वहाँ पहुँचा दी उधर। तो हमारे को भंगी कहते हैं, नहीं वो मुसलमान भी भंगी तो कहते हैं कि ये काम करते हैं। अब है तो अब थोड़ा थोड़ा का बदलाव अब आया है, फिर भी हमारे को बुला, शादी में नहीं बुलाते, पर एक साथ खाना नहीं खाते हैं। Positive discrimination has helped improve the lives of some Dalit groups in India. But the majority still live below the poverty line, illiterate, and deprived of basic human rights. The perennial problem is turning government policy and strategy into action that makes a real difference to people's lives. From the state side, there has been a lot of statement of policy. So the Constitution bans untouchability.
There are new laws after that, Prevention of Atrocities Acts. There is a commission for SC/STs. So it isn't that there isn't intention. People recognize that this is a problem at the highest levels. The Prime Minister has described it as apartheid. But what happens on the ground is that none of this is being implemented in quite the way that it should be. So we find that Dalits tend to be excluded by dominant class in regular life. The systems get perpetuated. In this country of 1.2 billion people, half of government jobs and education opportunities are reserved for certain castes and social groups. That means that the estimated 100 million Dalit Muslims don't have the slightest chance of finding a basic job. They may have rid themselves of class prejudice, but they continue to struggle on almost every front. आप अगर अब देखें कि दलित मुसलमानों की क्या हालत है, दलित मुसलमान आज की तारीख में जो एजुकेशन के लेवल में दलित और आदिवासियों से भी पिछड़ते हुए जा रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में वो आगे बढ़ रहे हैं, जो उनके पास इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं उसमें बुरी हालत है, एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट अलग तरह के वो जनरेट नहीं कर पा रहे, ले नहीं पा रहे हैं, और मेरे ख्याल से यही हालात रहे तो अगले 10-15 सालों में उनकी हालत इस देश में सबसे ज़्यादा बुरी हालत होने वाली है, और वो होती जा रही है दिन ब दिन, वो इस तरह की हालत है। That's all the time we have. Visit our website, QuranSpeaks.com, and check out our YouTube channel, youtube.com/QuranSpeaks. Please continue to write to us. We welcome your comments and questions. I'm Safiya Ali. For all of us here at Let the Quran Speak, thank you for watching. I'll see you next week.